प्रावधान पढ़ दीजिए आप, तो मुझे रिस्पेक्टफुली की जरूरत ही नहीं है। आप तो प्रावधान पढ़िए, किस प्रावधान में कलेक्टर साहब को अधिकार है या आदेश देने का, प्रोविजन तो बता दीजिए। जन सुनवाई में किस प्रावधान के अंतर्गत उन्होंने ये आदेश दिया है? आप मुझे जो बात पूछना उतना बताया करिए। आप लोग क्या दाएं बाएं बहुत भागते हैं? ये नहीं, सर काउंसिल आपसे जितनी बात पूछते हैं उतना बताइए ना आप। आपका पक्षकार देख रहा है क्या आपको? मैंने आपसे ये पूछा कि उसमें कलेक्टर साहब का जन सुनवाई में आधी सैलरी देने का आदेश कहां पर है? आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है। अभी भी तुगलक जिंदा है कि हिटलर आ जाता है आप लोगों के अंदर? In this matter, on the direction issued by the collector in Jan Sunwai Lordship, the salary of the petitioner has been deducted and half portion of that salary has been directed to be given to the wife. Respondent number जी 4, 5 Emperor Lordship. क्या आपका मेंटेनेंस का झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, मेंटेनेंस का झगड़ा she has filed in court under section 125. हाँ हाँ। It has been stated कि 11/2/2013 को कलेक्टर ने जन सुनवाई में एक डायरेक्शन दिया कि इनका खाता साथ में खुलवाया जाए। कितना अमाउंट दिया है? आधी सैलरी उनको देने को बोल दिया कलेक्टर ने। मेंटेनेंस कितनी है? मेंटेनेंस अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल पेंडिंग। कोर्ट ने कोई जीरो मेंटेनेंस कर दिया क्या? हाँ, क्योंकि उसमें वन जवाब आ गया इसमें? हाँ, स्टेट तो आ गया है। बताइए किस प्रावधान में किया है कलेक्टर साहब ने ये आदेश? कलेक्टर साहब ने किस प्रावधान में किया है ये आदेश, इतना बताइए। Para 5 of the reply. पढ़िए ना। Answering respondent most respectfully submit that brief is that on प्रावधान पढ़ दीजिए आप, तो मुझे रिस्पेक्टफुली की जरूरत ही नहीं है। आप तो प्रावधान पढ़िए, किस प्रावधान में कलेक्टर साहब को अधिकार है या आदेश देने का, प्रोविजन तो बता दीजिए। जन सुनवाई में किस प्रावधान के अंतर्गत उन्होंने ये आदेश दिया है? लिखिएगा। ये सर इसमें देखिए एफिडेविट फाइल करिए कलेक्टर का। पिटिशनर्स ग्रीवेंसेस that collector Singrauli during Jan Sunwai directed that 50% of the salary of the petitioner be disbursed in favor of respondent number 5, who is wife of the petitioner. Full stop. It is submitted that case for maintenance under section 125 CRPC is pending before the competent court. Full stop. No quantum of maintenance has been decided by the competent court. Next para. In view of such facts, कहाँ है वो आदेश जन सुनवाई वाला? जन सुनवाई वाला आदेश आई हैव फाइल्ड अलॉन्ग विद, बिकॉज उसको सिर्फ रिफर किया था जो इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर इन एक्शन P9। मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया है लॉर्डशिप। आप मुझे जो बात पूछना उतना बताया करिए। आप लोग क्या दाएं बाएं बहुत भागते हैं? ये I have moved an application for bringing on record the document which I have received under RTI, Lordship. That is amendment application. Yes, Lordship. Because that is the order of collector. Because it is referred in the order in Annexure P9. Sir, काउंसिल आपसे जितनी बात पूछते हैं उतना बताइए ना आप। I apologize, Lordship. आपका पक्षकार देख रहा है क्या आपको? I'm sorry. कहाँ है वो ऑर्डर इसमें आधा देने के लिए कहा गया है? This is order in Annexure P9, Lordship, that has been issued by District Project Coordinator. पेज नंबर 30 अमेंडमेंट एप्लीकेशन के साथ में है ना? इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। मैंने आपसे ये पूछा कि उसमें कलेक्टर साहब का जन सुनवाई में आधी सैलरी देने का आदेश कहां पर है? दिस इज विथ अमेंडमेंट एप्लीकेशन एट पेज 11, लॉर्डशिप। पेज 11, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। दिस ऑर्डर वाज पास्ड बाय दी देन कलेक्टर सिंगरौली ऑन 11/2/2013। फुल स्टॉप। It is not made clear that as to under which provision of law Collector M. Selvendran and Mission Director Singrauli had passed said order. Let affidavit of Shri M. Selvendran, if he continues to be in service of the state of Madhya Pradesh as an officer of, be brought on record by the respondent state that as to under which provision of law he had passed said order and how it is sustainable in the eyes of law. Let affidavit be filed within 2 weeks. Duly supported with an affidavit of the present collector, and another affidavit of the present collector be also filed. Collector Singrauli be also filed to point out that अच्छा सेल्वेंद्रन छोड़ दीजिए, वो तो पार्टी नहीं है। एफिडेविट ऑफ द प्रेजेंट कलेक्टर भी, प्रेजेंट कलेक्टर
Singularly be filed as to under which provision of law such direction could have been. ये छोड़िए क्या करना है इसको ऐसा लिखिए this there is Shri Vijay Kumar Shukla is not in a position to point out that under which provision of law this order has been passed. Since the order is cryptic, illegal on face of it, and no provision is mentioned in the said order, it is apparent that the then collector Singrauli exceeded his jurisdiction and passed said order in a arbitrary and illegal manner. That order cannot be given seal of approval. It is hereby, the order of the collector is hereby quashed. Any recovery made from the petitioner be refunded to him, along with 8% interest thereon within 30 days from today. I make up. Lordship, consequential order is by DPC, Annexure P9, Lordship. P9. That may also be correct. Consequential order passed by the District Project Coordinator. District Project Coordinator passed on 12/10/2021 is also hereby quashed. ठीक? It will decide in under 125. वो decide करेंगे उसके लिए हम थोड़ा ना कर सकते हैं. It is made clear that amount of maintenance will be payable only as per the directions of the concerned competent court and not as per the directions of the collector, who has no authority to order for payment of maintenance or deduct any salary. Petition is allowed. Collector Singrauli shall also bear cost of this litigation, which is quantified at rupees 25,000, which may be recovered from the erring official, namely the then collector Singrauli and the then district project coordinator, district education center Singrauli, who passed order dated 12/10/2021 jointly and severally. आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है. अभी भी तुगलक जिंदा है कि हिटलर आ जाता है आप लोगों के अंदर. इसको रफ दीजिएगा, इसको सही कराना पड़ेगा थोड़ा सा.